रांची के डोरंडा में रहने वाले 9 वर्षीय रिधान गुरुंग न सिर्फ अंग्रेजी भाषा के 5 एक्सेंट को बोल पाते हैं बल्कि अलग अलग विशेषता, भिन्नता और उनके बोलने के लहजे के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। में पढ़ने वाले रिधान का कहना है कि 3 वर्ष की उम्र में टीवी में अंग्रेजी के कार्टून देखकर इस ओर उनकी उत्सुकता बढ़ी और अलग अलग चैनल देखकर इसे समझने की कोशिश की। मेरा नाम रिधान है, मैं क्लास 3C में पढ़ता हूँ और मैं डोरंडा रांची में रहता हूँ। और उसके साथ जो मैंने एक्सेंट्स के बारे में जो बोला था, मुझको एक्सेंट्स में अमेरिकन, ब्रिटिश, आरपी, पोश और ऑस्ट्रेलियन आती है। और उसके साथ अगर हम लोग अमेरिकन से अगर चालू करते तो मैं अभी अमेरिकन में एक बोलता हूँ. Okay, when we do any type of American accent, yes, if we do any American accent, I have 3 tips. The first tips is only in the American accent, you need only the fat and dull voice. The second is hard and fast voice. The third thing is the pronunciation and vocabulary. Okay. Okay. For the example I want to give, in the example we can give like the boys are playing in the park, the girls are playing with the dolls. We can say like that in the American accent and American accent. I got the experience from my TV, and in the TV I watch any types of TV series or cartoons or animes. Then I got so much enjoyed from their accent or languages, and I am so happy from their accent and languages. Then I do American accent, and then British accent, and then Polish and RP accent. In the age of 6, I have completed this all types of things. In the age of 6, I have completed all types of accent that I have learned. And for now, the accent that I'm learning, it is only the Scottish accent, the Cockney, Norfolk, Irish accent. Okay, when we do any type of American accent, yes, if we do any American accent, I have 3 tips. The first tips is only in the American accent, you need only the fat and dull voice. The second is hard and fast voice. The third thing is the pronunciation and vocabulary. Okay. Okay. For the example I want to give, in the example we can give like the boys are playing in the park, the girls are playing with the dolls. We can say like that in the American accent and American accent. And for the now, we are going to do the Australian accent, because if you do any type of Australian accent, the first tip I want to give you the hard and fast voice, and the second thing is the American English accent, and the third thing is the vocabulary. Let's start. Did you wear your runners? Did you wear your sweater? Did you get your check? We say it like the all types of sentence in the Australian accent. Okay, when you sound like the Polish accent, as also the accent, but if you do any type of Polish accent for the girls and the boys, when the boys pronounce and say any type of word or vocabulary sentence or any type of thing, they say like that. Can you turn off the TV? Because TV is bad for your eyes. We say like that in the Polish accent, because the first tip I want to only give you, Polish is also like a British and receive pronunciation known as a RP. But if you do this Polish accent, the first thing is on your mind is you only need to be like a Britisher. Because if you do this thing, you only in your mind is a little bit of thin voice. A thin voice, the first tip. The second tip is not a rolling tongue. Third thing is on your tongue and then pronounce any type of word or particular word. Let's pronounce can you turn off the TV? Because if you not turn off the TV, it will hurt for your eyes. In the Polish accent, we can say like that. Well, the boys are playing.
You hear me about that? That I make the sentence of the boys are playing, because when I pronounce this word, the boys are playing, in the RP accent, let's hear me again. The boys are playing. The girls are playing with the dolls. The 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 girl is walking to the park. When you hear me in this accent, you hear me that the receipt pronunciation in the short form we can tell like the RP and the British and the RP British English. The first tip I want to only give you two is the British is also sound like posh, but if you do any type of RP accent British or posh accent, the first thing on your mind is the receipt pronunciation, because if you do this RP accent in the RP, every people talk in the thin voice, but in the little bit harder and the faster. And the third thing is the vocabulary and a little bit of only the tongue rolling voice. Let's start. And for now we're going to start the British. बार बार एक ही रिधान चीज़ को की कराने पे नानी माया इरिटेट हो देवी जाएगा। बताती कि उसे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि रही है। उसने खुद से ही अंग्रेजी भाषा की कई एक्सेंट को समझने और सीखने की कोशिश की और बिना किसी सहायता लिए लगातार सीखता गया। पढ़ने लिखने में ही छोटे ही से एकदम मैंने कुछ भी बताए ना, ये बहुत जल्दी उसको सीख जाए। ऐसे करते करते इसको 2-3 साल और कभी पढ़ने में इसको कोई भी चीज़ पढ़ने देते हैं ना तो वो अपने पढ़ लेता था आराम से। और इसका हमेशा चाह रहता था ना कि आगे कुछ सीखे, इस तरह का उसका सीखने का वो था। जब जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको मोबाइल टीवी देखने का आदत हुआ तो और सब मोबाइल और टीवी से ही वो जो कुछ सीखा है वो अपने बदौलत ही सीखा है। हम लोग तो थोड़ा बहुत हाँ सीखो अच्छा है, किंतु छोटे ही से उसका दिमाग बहुत फ्रेश था और कोई भी चीज़ उसको जानने का उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होता है। कोई भी चीज़ छोटा से छोटा चीज़ भी उसको जानने का, चाहे पढ़ने में लिखने में, चाहे कोई हिस्ट्री बोलिए कोई कहानी बोलिए, कुछ भी है उसको आगे ज़्यादा इच्छा होता है जानने के लिए। इसी तरह वो अपना ये जो सीख रहा है भाषा उषा सब उसी तरह वो सीख रहा है और अपना कर रहा है।